Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and welcome you all on today's class. And now, my dear students, we are moving towards the word problem. Okay. Today we are going to move on page number 167 word problem. Page number 167 word problem we have to solve. Okay. And these word problems are very easy and we will do the same thing that we did before. हम लोगों ने जो पहले किया वो हम लोग अभी भी वही करेंगे. Okay, first of all, what you have to do if you want to solve the word problem, first of all, you have to read the question 2 times, 3 times, or 4 times so that you will understand whatever is given to us, whatever. That means if what information, which type of information is given to us, what type, what is the question and what we have to find, and then we will think about it. How can we find out the answers? Okay, so let's read the question number 1, and that is what? School begins. Okay, school begins at 8:20 a.m. So the school begins means what? It is the starting time of school, and that is 8:20 a.m. So dear students, what is that? It is 8:20 a.m. It is a time during the day. That means it is early in the morning. 8:20 minutes past 8, or we can say that it is 8:20 a.m. Okay. Ritu reached to the school. Ritu reached to the school at 8:05 a.m. लेकिन रितु जो है वो क्या हुआ, वो 8:05 पर ही पहुंच गई. ओके, व्हाट इज द स्कूल टाइमिंग? द स्कूल टाइमिंग इज 8:20 a.m. बट शी रीच अर्ली at 8:05 a.m. 8 hours and 5 minutes a.m. Okay. How many minutes early does she reach to the school? वो कितने जल्दी, कितने ज्यादा जल्दी स्कूल पहुंची है. ठीक है, दैट मीन्स बहुत सिंपल है. 8:20 पे स्कूल ओपन होने वाला है, लेकिन वो 8:05 पर ही पहुंच गई है. सो 8 hours and 8 and 8 तो सेम है. Here is 5, here is 20. That means 20 minus 5, that is 15. So dear students, the Ritu reached the school 15 minutes early. ठीक है, 15 मिनट पहले पहुंच गई है. तो हमको तो समझ में आ गया कि आंसर कैसे लिख, आंसर क्या आने वाला है. But before that, we have to write the answers in the form of statements. First of all, we will write the statements, whatever given to us. Then we will find the answers. Okay, that is step by step. हम लोग step by step चलेंगे. So first of all, we have to write the starting time of school. All school start at start at 8 hours 20 minutes a.m. Okay. Ritu reached the school. Ritu reach. स्पेलिंग गलत नहीं हुई. To school. Ritu reaches to the school at what? 8 hours 5 minutes a.m. Now how many minutes early does she reach to the school? That means what we have to do, we have to find how many minutes early she reached to the school. So we will write here. Okay, what we will write? She reaches early to the school in minutes. Okay, in minutes. We have to find in minutes, and that is the question mark. What is the question mark? She reaches early to the school in minutes. We have to find how many minutes she early reached to the school. So what we have to do, we have to subtract 8 hours 5 minutes from the 8 hours 20 minutes. So here I will write 8 hours 5 minutes in the AM. Okay, in the AM. And similarly, we will write 8 hours and 5 minutes. Sorry, 8 hours and 20 minutes I will have to write here. 8 hours and 20 minutes AM. Now we want to find out the difference between these two times. That means we will subtract it. 0 minus 5 is not possible. That's why here the 1 will be left. Here will be 10. Okay. 10 minus 5 will be 5. Okay. Then here will be 1. Here will be 0. Okay. 15 minutes. So what is that? How many minutes she
reach early, that is the 15 minutes, 0 hours and 50 minutes. So मैं इसको हटा करके लिख दूंगा, she reaches early to the school in minutes, that is the 15 minutes. Okay, 15 minutes. Okay, that is the answer. I hope you understand. Quickly note down in a maths notebook. You have to solve this question in maths notebook, my dear. आपको इसको maths notebook में ही लिखना है. Okay. Okay, dear students, so now we are moving toward the question number 2, and the question number 2 is, a cartoon show started at 7:05 p.m. That is what? A cartoon show is started at 7 hours 5 minutes and p.m. That means it is a time 7 hours and 5 minutes p.m. It is indicating the time of evening. Okay, that is शाम का समय है, ठीक है. But Chino switched on the television only at 7:20 p.m. So dear students, so the timing of cartoon show is started at 7 hours 5 minutes at the PM. Okay, 7 hours 5 minutes PM. 7:05 वो भी PM पे आपका कार्टून शो स्टार्ट हो गया था. But now what is that? The Chino switched on the television at 7 hours and 20 minutes. 7:20 पे उसने क्या किया? टेलीविजन स्टार्ट किया ना, स्विच ऑन किया. नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी मिनट्स ऑफ कार्टून शो. हाउ मेनी मिनट्स ऑफ कार्टून शो डिड ही मिस? उसने कितना मिनट का कार्टून शो मिस कर दिया? ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स. So first of all, I have written the first statement, that is a cartoon show started at. We have to write the time here. It is a 7 hours 5 minutes. Okay, at PM. Okay, 7 hours 5 minutes PM. Then we have to write the second information which is given in this question, and that is Chino switched on the television at 7 hours and 20 minutes. Okay, 7 hours 20 minutes PM. ठीक है, 7:20 पे उसने स्टार्ट किया. Now we have to find cartoon show did he miss, and in the minutes we have to find. So first of all, what we will do? We will subtract the 7 hours 5 minutes from 7 hours 20 minutes. Okay, we already know the answer is 15 minutes, but formality है, हमको solve step by step ही करना है. ठीक है, so let's solve here. 7 hours 20 minutes, 7 hours and 20 minutes, and here we will write 7 hours and 5 minutes, and we have to find the difference between these two timing, that means the time duration. Okay, 7:20 से 5 मिनट से लेकर के 7:20 तक के बीच में कितना टाइमिंग मिस हो गया? So we will subtract it. 0 minus 5 again not possible. We will take a borrow from here. The 1 will be left over, and this becomes 10. 10 minus 5 becomes 5. 1 minus 0 is 1. 7 minus 7 is 0. So again the time is 15 minutes. So here we will write, what we will write? You can write 15 minutes directly over here, or you can write the answer like this. Chino miss a cartoon show of 15 minutes. जिन्होंने क्या किया? 15 मिनट्स का कार्टून शो मिस कर दिया. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो क्विकली नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक. Now let's move toward the question number 3, and the question number 3 is, a T20 match started at 10:30 a.m. T20 match, 2020 match is started at 10:30 a.m. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है. ठीक है, 10:30 a.m. that is a time during the day, 10:30 a.m. Okay, that means before the 12
o'clock. It is before 12 noon. So that is AM and ended at 2:15 p.m. अब ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पर है, the timing is given here. The first timing is given in AM and the second timing is given in the PM. Okay. So अब हम लोग यहाँ से subtraction नहीं कर सकते. Problem है. हम लोग if the two timing is in different, that means what? Different unit. It is a time duration during the afternoon. That means it is a PM and that is the AM. अगर एक टाइमिंग AM में है और दूसरा टाइमिंग PM में है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करना मत, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज लेट अस सपोज दैट अगर आपने 10 में से 2 आवर्स माइनस कर दिए, ठीक है, 10 में से 2 आवर्स माइनस कर दिए, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स आंसर आएगा. लेकिन 7 आवर आंसर है नहीं. ठीक है, आंसर थोड़ा सा अलग है. हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते बिकॉज दोनों टाइमिंग अलग अलग है. ठीक है, सो हियर वी विल यूज अ एडिशन मेथड. दैट मीन्स वी विल ऐड द टाइम. हम लोग क्या करेंगे, मिनट्स एंड आवर्स ऐड करते जाएंगे 10:30 AM में. कब तक? जब तक के 2 hours and 15 PM, दैट मीन्स 15 मिनट्स नहीं आ जाता तब तक के. ठीक है, एंड देन वी विल फाइंड हाउ मच टाइम वी हैव एडेड इन टू 10 hours and 30 minutes to get at 2 hours and 15 minutes in PM. Okay, so I hope you understand. Let's solve the question now. First of all, we have to write the statements. So here we will write a T20 match started at, starting time लिख देते डायरेक्टली. starting time of T20 match is what? Is 10:30 AM. Okay, that is a starting time of T20 match. Now let's understand about the finishing time. That is what? But the finishing time is given to us and that is a 2:15 PM. Okay, एक हमारा AM में है, दूसरा हमारा PM में है. तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ओके. So now we will write down. Now what we have to write? We will write the finishing time of T20 match. Okay, finishing time of T20 match is given and that is what? It is 2:15 PM. That is a 2 hours 15 minutes in PM. Now my dear students, we have to find the time duration between the starting time and finishing time. हमको क्या निकालना है? स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम के बीच का जो टाइमिंग है वो निकालना है. ठीक है, सो मैं यहाँ पर एडिशन मेथड यूज करूंगा. आई विल यूज द एडिशनल मेथड. दैट मीन्स आई विल ऐड द टाइम, मिनट्स एंड आवर्स इन दिस 10:30 AM अप टू टिल 2:15 PM. जब तक 2:15 PM नहीं आता तब तक मैं टाइमिंग ऐड करते जाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ 10:30 AM. नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इसको राउंड फिगर में ले आते हैं. 10:30 AM में मैं पहले 30 मिनट्स ऐड कर देता हूं और मैं जैसे ही 30 मिनट्स ऐड करूंगा तो 10:30 AM विल बी 11 AM. ठीक है, प्लस 30 minutes. Okay, I am adding the 30 minutes. So when I will add the 30 minutes in 10:30 AM, so the time becomes 11 AM. अब 11 AM आ चुका है. ठीक है, अब हम लोग 11 AM से कहां जाने की कोशिश करेंगे? We will go from 11 AM to 2 PM. 2 PM तक जाते हैं. मिनट्स हम लोग फिर बाद में देखेंगे. ठीक है, so now I want to reach to 2 PM. ठीक है, देखो 11 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कितना टाइमिंग चला गया? फ्रॉम 11 AM, if when I will add 1 hour, the time becomes 12 noon. 12 बज जाएंगे. फिर 1, फिर 2. So that is a timing of 2 PM. So 3 hours. So when I will add 3, और 3 लिखना रे भाई. पहले लिखो 3 and then I will write hours. 3 hours. So when you will add 3 hours in 11 AM, the time becomes 2 PM. Now we have to reach to 2:15 PM. हमको तो 2:15 PM तक पहुंचना है. So we will add again 15 minutes here. Plus 15 minutes. And when I will add a 15 minutes, so the time will be 2:15 PM. 2:15 PM. Okay. So now we will add
how what we have to add, we will add how many time duration. देखो दो टाइमिंग के बीच बीच में कितना कितना टाइमिंग चला गया, वी हैव टू राइट डाउन दैट वन. सो दैट इज अ 30 मिनट्स. यस, सो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स प्लस देन वी हैव एडेड 3 आवर्स. फिर हम लोगों ने 3 आवर्स ऐड किया था, 3 आवर्स, 3 hours, then we have added a 15 minute again, 15 minutes, and that is the total what, 3 hours, 30 minutes plus 15 minutes, that is the 45 minutes. So what is the time duration between the 10:30 a.m. and 2:15 p.m.? The time is 3 hours and 45 minutes. It is a 3 hours and 45 minutes. Okay. Okay, so that is the answer. So we will write here the match lasts for, or the T20 match you can write, a match lasts for how many time? 3 hours, 3 hours and 45 minutes. एक बार फिर से देखो, मैं बता देता हूं कैसे आंसर्स आए हैं. इट इज, लिसन केयरफुली हियर, व्हाट इज गिवन टू अस, द टाइम इज गिवन व्हिच इज अ स्टार्टिंग टाइम ऑफ मैच इज 10:30 am and the finishing time which is the ended time is 2:15 pm. So dear students, here we can't subtract because the timing is given in different categories. Here is am, here is pm. Subtraction possible नहीं है, आंसर गलत निकलेगा, यहाँ subtraction करना मत. ठीक है. So here we will use a addition method. So what we have to do, we will add the time. Yes, we will add the time, minutes, hours. इसमें ऐड करते जाएंगे. कब तक ऐड करते जाएंगे? किस में ऐड करेंगे? We will add in 10:30 am. We have to add the time in 10:30 am up to till. कब तक ऐड करते जाएंगे? जब तक कि 2:15 pm नहीं आ जाता. Then we will count the total number of hours and minutes we have added in 10:30 am to reach 2:15 pm. ठीक है. तो मैंने 10:30 am से स्टार्ट किया, तो इसको राउंड फिगर में लाने के लिए, यानी कि 11 am को लाने के लिए मैंने क्या किया, आई जस्ट एडेड द 30 मिनट्स. सो व्हेन वी विल ऐड 30 मिनट्स, द 10:30 am बिकम्स द 11 am. तो अब 11 am में आ गया. देन वी विल मूव टू द टाइम इज गिवन इन आवर्स एंड मिनट्स. तो मैं 2 बजने तक की कोशिश करूंगा फटाफट से. ठीक है, राउंड फिगर में आना चाहिए. 11 am टू 2 pm में मुझे जाना है. So what I will do, I will add a 3 hours. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में लिखो. You can write 11 am to 12 am, 12 am to 1 pm, sorry 12 noon to 1 pm, 1 pm to 2 pm. But step by step इतना लंबा करते करते टाइम लग जाएगा. That's why I have what I did. I just added directly 3 hours in 11 am. So I directly reached to the 2 pm. Now only 15 minutes we have to add to reach to the 2:15 pm. तो मैंने फिर से 15 मिनट्स को ऐड कर दिया एंड आई फाइनली रीच टू द 2:15 pm. ओके, सो आफ्टर दैट आई जस्ट काउंटेड हाउ मेनी मिनट्स एंड आवर आई एडेड इन 10:30 am टू गेट 2:15 pm. ओके, सो it is 30 minutes. I just first of all I added 30 minutes, then I added 3 hours, then I added a 15 minutes. तो 3 hours, फिर 30 minutes and 15 minutes. तो 3 hours तो मैंने जैसे कि वैसे रखा. I just put it 3 hours as it is, and the 30 minutes and 15 minutes I added together, so I got a 45 minutes. So the final time is, the match lasts for the 3 hours and 45 minutes. I hope you understand, and please note down in a maths notebook. Dear students, you can solve the question number 4, 5 and 6. That is your homework. It is very very simple. बहुत simple है, बहुत ही आसान है. ठीक है, you can use the addition method और subtraction method. Addition method सिर्फ आपको तब यूज करना है जब टाइमिंग अलग अलग कैटेगरीज में हो, या फिर आप कभी भी यूज कर सकते हो. बट subtraction method हम लोग यहाँ यूज नहीं कर सकते because the time is different. Okay, first time is given in AM, the second time is given in PM. So we will use the addition method. It is very very easy method. Okay. So this method will always helpful. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, so you can use this method. Okay, and have a good day. Bye bye and take care.